TPS. We want TPS. We want TPS. तेज हो जदोजहद तेज हो अमेरिका पाकिस्तान में जदोजहद तेज हो We want TPS. We want TPS. Pakistani government must act now. Pakistani government must act now. अमेरिका न्यूयॉर्क में TPS के हुसूल के लिए यूनाइटेड नेशंस की इमारत के सामने पाकिस्तानी ख्वातीनों हजरात की एक कसीर तादाद ने मुजाहिरा किया। इस मुजाहिरे में देसीज राइजिंग अप एंड मूविंग ड्रम और अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर और पाकिस्तानी अमेरिकन स्किल्ड वुमेन की ख्वातीनों हजरात ने शिरकत की। अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर की CEO इरम हनीफ ने प्रोग्राम रन किया। मोहम्मद फैसल ने तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। TPS के बारे अपना अपना इजहार ख्याल किया। मेरा नाम मोहिबा अहमद है और मेरा ताल्लुक ड्रम से है और अभी 1.5 साल पहले ही मैं पाकिस्तान से अमेरिका आई हूँ और मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रही हूँ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये जो हम अभी किस लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम TPS के नारे लगा रहे हैं। हम TPS और SSR का जो प्रोग्राम है उसके हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद है और हम चाहते हैं कि जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, बिला कागजात लोग मौजूद हैं अमेरिका के अंदर और साथ ही साथ जितने भी लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो F1 वीज़ा स्टेटस के ऊपर पाकिस्तान से अमेरिका पढ़ने के लिए आए हैं, उनको TPS और SSR का प्रोग्राम फराहम किया जाए। इस वक्त हम क्यों TPS और SSR की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि पिछले साल कितने बड़े लेवल पर पाकिस्तान जो है वो सैलाब से मुतासिर हुआ और कितना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान में लोगों को उठाना पड़ा। ना वहाँ पर अब खाने के लिए खाना है मौजूद है, ना लोगों के पास घर मौजूद है, ना बच्चों के पास तालीम मौजूद है, ना पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद है। और ये सारे मसले हैं जो पाकिस्तान में लोगों को इस वक्त उनसे गुजरना पड़ रहा है और इसका जो सारा का सारा इम्पैक्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोगों पर नहीं आता, वो जो उनके प्यारे रहने वाले पूरी दुनिया में हैं उनके ऊपर भी आता है। और हम वही लोग हैं, उनके प्यारे हैं जो यहाँ पर अमेरिका में मुकीम हैं और हमें उनका दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से हम पिछले 1 साल से जितना भी यहाँ पर कम्युनिटी कर सकी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने लोगों के लिए पाकिस्तान में उन्होंने किया है। पर अगर आप बिला कागजात यहाँ पर रह रहे हो तो आप कितना ही कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपके पास तो लीगल स्टेटस भी नहीं है यहाँ पर काम करने का। तो आप किस तरीके से उन लोगों की मदद कर पाओगे जो इतने बुरे हालात से पाकिस्तान में गुजर रहे हैं। तो यही हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लोग तो मदद कर रहे हैं पर क्या हुकूमत सोई हुई है? किधर है हुकूमत अपने लोगों के लिए? ना वो पाकिस्तान में लोगों की मदद कर रही है और ना जो उनके बासी और मुल्कों में रहते हैं वहां पर उनकी मदद कर रही है। तो हमारी गुजारिश है फॉरेन मिनिस्टर से कि हमें एक सफ़े का लेटर चाहिए जिसकी बुनियाद पर 60,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इतना TPS का जो है और SSR तो 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनको उसका फ़ायदा होगा। और हम जो अपने लोग हैं, अपने प्यारे हैं, उनकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे पीछे घर में। और यही हम चाहते हैं। हम सब यहाँ पर मजबूरी की हालत में आए हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास कागजात नहीं हैं, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर F1 स्टेटस पर पढ़ रहे हैं। हम मजबूरी की हालत में अपने मुल्क से निकले हैं, पर हम अपने मुल्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो प्लीज़ हमारी आवाज़ सुनिए, प्लीज़ हमारी आवाज़ को इस तरीके से इग्नोर ना किया जाए। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर मौजूद है, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है हमारे मुल्क के, और ये हमारे लोग हैं हमारे मुल्क के। ये सब औरतें हैं जो अफेक्ट हो रही हैं इन सारी चीज़ों से, जिनकी फैमिलियाँ अफेक्ट हो रही हैं इन सारी चीज़ों के। और औरतों के इस जो
वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन डे है, उसके ऊपर हमारी आवाज़ सुनिए, पाकिस्तानी औरतों की आवाज़ सुनिए और हमारी इसमें मदद की जाए कि TPS और SSR का प्रोग्राम जो है उसके लिए एक जो है कदम आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट पासवा ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम अपने हक के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वो ख़वातीन या वो पाकिस्तानी जो कि इस 62,000 के करीब है और उनके पास पेपर नहीं है, और उनके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि उनको TPS दिया जाए और SSR, और उसकी भी वो जो है हमें पेपर चाहिए, ताकि कि उनको ये डर ना हो कि वो डिपोर्ट हो जाएंगे, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। तो उसके लिए हमारा ये नारा है UNO के सामने कि हम लोग अपने वज़ीरे ख़ारजा जो हैं हमारे बिलावल साहब, वो आए और हमें ये लेके दें पेपर। शुक्रिया। My name is Mahnur Zahir. I'm part of Apna Community Center in Brighton Beach. First of all, I'm honored to be here to represent my beloved Pakistani brothers and sisters. I'm not undocumented myself, but that does not mean that I don't have the opportunity or the platform to raise the voice for my beloved Pakistani brothers and sisters. However, my parents are immigrants. They have been hardworking and courageous to exist in this society. We all know how many hardships immigrants face. All I would like to say is that we all should stand up and raise our voices to support support TPS and SSR. I think that it's a great opportunity for students and immigrants who are here who have not gone back to Pakistan for a very long time, and they miss their family and they miss their friends, they miss their country, and because of just not having legal documents, they're not able to go because they're afraid that they won't be able to come back. So I think that everybody that's here today, we're here to support our brothers and sisters, and we hope that today will push our foreign minister to finally just do one simple thing, which is just a letter or an email, and it's a very simple step, but God knows why one simple step is not occurring, to finally give again our brothers and sisters the opportunity to go back to their country and finally be with their family members. Thank you so much. Give opportunity to Rahila from Paso to please share her comments. मैं राहिला बोल रही हूँ। आज मैं पासो की तरफ से इधर सामने खड़ी हूँ और मैं खुद सिटीज़न हूँ, लेकिन मैं आज अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिनके पास पेपर नहीं होते उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं अमेरिका में, उनको यहाँ रहना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की इतने हालात ख़राब हैं जिसकी वजह से वो रहना चाहते हैं इधर, और मैं चाहती हूँ कि उनको TPS मिलना चाहिए, उनको पेपर मिलने चाहिए 3 साल के लिए, वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सके। प्लीज़ ये बिलावल भुट्टो से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम लोगों की हेल्प करें, हम लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे, प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें। थैंक यू सो मच। We want TPS. We want TPS. We want TPS. Pakistani government must act now. Pakistani government must act now. जब लोग हो इकट्ठे तो हार नहीं सकते। जब लोग हो इकट्ठे तो हार नहीं सकते। My name is Abira. First of all, I would like to start with, I love the fact that so many of us came together, so many women, and happy belated Women's Day to all of you that came here together. It is so wonderful to see this. It genuinely makes me happy, makes my heart happy that we are doing all this collectively for our community to make a difference here. So I would like to start with a little personal story. My mother brought me here when I was 13. My mother was a phenomenal, strong, fierce, single mother. And she brought us here for us to have a better life. And she wanted us as women to have more control over our lives, and so we came here. Now my mother, for 8 years, she waited to get her documents so she could go visit her family back in Pakistan. Now she missed so many weddings and so many funerals. She survived through FaceTime and through video calls, and it was so sad to see her crying over every Eid, every event. And 8 years later, my mother actually passed away before she could get her documents. So the point of this is that there are so many other women and men like my mother who could not get their documents, who could not say goodbye to their families. She could not visit her parents' grave, and it is the saddest thing
that still so many people have to go through that. Maybe they will run out of time before they can go visit their family back home. So for that reason, this is a very vulnerable community. You don't see people come together every day and talk about these issues. So it is so important that we amplify their voices, we become their voices, and we make this happen together. Thank you so much. Thank you so much, Abira, for being so fearless and courageous and sharing your personal story. There's thousands of young girls and young boys in this country right now dealing with all these crises and hardships. That's why we are here collectively to be their voice today. And thank you so much, and we'll continue our efforts to make it happen, make it done. मैं पासपोर्ट प्लेटफॉर्म की तरफ से एज अ सोशल वर्कर हूँ और मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा अपॉइंट होने पे। उसके बाद बिलावल भुट्टो कितनी दफ़ा आ चुके हैं, यहाँ पे दौरे कर चुके हैं, लेकिन वो कभी कम्युनिटी से इंटरेक्ट नहीं होते। और ये इशू पूरा 1 साल से चल रहा है TPS का, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बुला के ये नहीं पूछा कि क्या मसला है, क्या मसाइल है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऑलवेज इग्नोर किया जाता है यहाँ पे। कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे तहरीक इंसाफ की हो, चाहे बिलावल भुट्टो की हो, तो बिलावल भुट्टो साहब प्लीज़ वेकअप। आपकी वालदा ने जमहूरियत की खातिर शहीद हुई हैं आपकी वालदा, और आप वुमेंस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आए हुए और आप वुमेंस को इग्नोर कर रहे हैं। सो प्लीज़ वेकअप। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि खाली एक लेटर आप लिख दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक असासा है कि एवरी ईयर कितने आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर्स सेंड करते हैं, इकोनॉमी आपकी बिल्डअप होती है। आप एक लेटर लिख दें प्लीज़, ताकि हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और आपका इसमें एडवांटेज भी होगा, आपका वोट बैंक भी भरेगा। So the August of 2022 flooding was one of the largest natural disasters which has been witnessed with Pakistanis. During the 76 years of its independence, Pakistan never witnessed such a disaster and devastation. Flooding has left 1/3 of Pakistan underwater and devastated the country's healthcare system, education system, transportation, agriculture, everything. All the major infrastructures have been impacted because of those floods. 1 in every 7 Pakistanis has been impacted by the flooding. This has displaced 7.9 million people, impacted more than 33 million people, and thousands of people died. The actual number of the deaths are not on the records because in many villages whole families were died and there was nobody to report that data. The government of Pakistan does not have the actual number of how many lives we lost during those floods in so many rural areas where there was a complete blockage of everything. Hundreds of thousands of homes and many public health facilities, water systems and schools have been destroyed or damaged. Nearly 15 million people in flood affected areas need emergency food assistance, while an estimated 9 million people are being pushed into monetary poverty and learning losses from the floods. That's the story what happened last year, almost a year now. Such a devastation could not go over in few months or few years. It is a long-term process. Pakistan emits less than 1% of the world's planet warming, but it is the 8th most vulnerable nation to the climate crisis. Meanwhile, US is responsible for the largest share of historical emissions. It is on the record, everybody can go and check. The designation of TPS and SSR would allow Pakistani immigrants, including students, the ability to work in the US and provide relief to their families back home, and as well as they will be helpful for the Pakistani economy as well. We all are very aware how bad the political and economical situation of Pakistan is there. Thousands of people are waiting to barely put the food at the table. They are not able to bring the food with a minimum wage of 15,000 Pakistani rupees. How a household member is able to sustain and live. That is the reason more suicides are happening every other day. We are hearing stories
that the father killed himself and the children as well. A mother killed herself and her young adolescent children as well. That is the real fact. That is the level of the poverty, instability and economic crisis and unavailability of the jobs for our young youth. That is the reason our youth are forced to immigrate to different countries. And when they come here, they fear a lot of many challenges. There is a system in US that you can apply for public benefits. There is a system in US that you can apply for senior housing. There is a system in US that the women who are victims of domestic violence or intimate partner violence, they can get all those benefits. There is a system in the US government, in New York State and many other states to help our students go for paid internships opportunities, work with SYEP, DYCD and programs like that and live a dignified life. But what is happening on the ground with our thousands, like 62,000 plus undocumented Pakistanis living in the United States and more than 10,000 Pakistani students living across the nation are unable to access all these mainstream benefits they could be entitled to if they will get the TPS status or the SSR status. That is the reason you see this big crowd around me, all these working women. We all are not undocumented, but we are here on behalf of our brothers and sisters, those who are struggling every day and night and cannot fulfill their own living expenses. They cannot go back to their countries to help their people. We are here and we are sending millions of dollars in remittance every year to Pakistan. That is economical benefit to Pakistan. We are here, but we did not forget our country. We did not forget our country. Poor people, we all, I know, I can 100% assure that each one of us standing here, one way or other, sending money back home to support our family members, our neighbors, our relatives, our poor villagers, whether it's about providing the food, shelter, clothing, or healthcare facilities. So, here we are today, demanding the Pakistan government. The time for talks, commitments, and promises is over. We want action. What we want? Action. We want action. What we want? Action. We want action. We don't want any more promises. We don't want any more commitments. We don't want anything else. Time for dialogues is over now. It is the time to take action. The reason I have shared all that story because it's almost 1 year. Organizations like DRUM and many others have been advocating to get this TPS for 62,000 plus Pakistanis. But till date, we are here. No action has been taken. And that is the why we women decided to come on the streets in this month, which is a month of Women History Month. And we are here on the streets, away from our jobs, away from our families, away from our seniors, with only one hope and one request and a demand from Pakistani government: must act now. We are still love our country, but the situation over there is so worse. Nobody would want to go back under this instability, under these crises. And we are here to support and stand together with our brothers and sisters who are living like a nightmare. We can speak, but we cannot feel their real pain. Who have endorsed this today's protest? Care New York, Muslim Democratic Club of New York, Kavish TV, AP-PAC, PACE, PIO, Brooklyn Emerge, PASO, ACMW, Turning Point, Adhikar, African Communities Together, and APNA, APAC as well. And who else is there? I am missing one name and I cannot. Is what's this organization? Khyber Society as well. So thank you so much to all these organizations for endorsing today's protest, and it is a peaceful protest. We just came here to share how we feel and what we want in a peaceful manner, because the dialogue's time is over and we want real actions. Thank you so much. Jazakallah khair. TPS. We want TPS. We want TPS.
Now for the last speak, one of our brothers want to speak who is not Pakistani, but he wants to speak in support of like the Pakistani people. Thank you for having me here. My name is Safidar Sharab and I am from Bangladesh. I am not Pakistani, but I am also a New York City labor movement activist. I am a union member and I know as a union member and as a worker how important TPS is to grounding working class communities and families in this city. How important it is to keeping families together and keeping communities strong. So when it comes to the 60,000 plus Pakistani workers who are supporting families affected by disaster and devastation through many things back home, we need to act, and Bhutto and Pakistan need to act and not turn away billions of dollars in help in order to stabilize Pakistanis here who are connected to the suffering of people back home. We need TPS for Pakistan now. I'm proud to stand with you guys here today, and I want to say it loudly with everyone. What do we want? TPS! What do we want? TPS! When do we want it? Now! What do we want? TPS! When do we want it? Now! What do we want? TPS! When do we want it? Now! Thank you. We are not the ones who got paid $7 or $8 or $6 per hour for such a hard labor. Working in the departmental store, grocery stores, are young girls attending schools in the morning and working at different stores in the evening just to continue their education and send money back to their families so they can support and live a dignified and respectable life. Thank you so much. This is what I wanted to say here, that we are here, we are united, and we will not stop here. It is just our first step. We will continue our efforts until the government on Pakistan's side and as well as the US government take the necessary steps to make it happen. Thank you so much, all the brothers, all the sisters, all the seniors, and all the women, those who joined us today. Thank you, all the organizations as well, who came together in a matter of only 2.5 days. We are able to bring so many Pakistani organizations, so many Muslim groups to endorse this effort. Thank you, and inshallah we'll do it. मैं समरीन हुसैन रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस वक्त पावर्स न्यूयॉर्क टीवी को। मेरे साथ है मुहिबा अहमद ड्रम ऑर्गेनाइजेशन से TPS का जो कॉज है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनाइटेड नेशन के सामने। आपकी कैंपेन बहुत अच्छी गई है। फ्यूचर में कल या परसों कोई मुलाकात एक्सपेक्टेड है आपकी बिलावल भुट्टो के साथ? वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है। देखिए मुलाकात तो ऑलरेडी हम उनसे कर चुके हैं इस मामले पर। TPS और SSR के मामले पर हमारी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हो चुकी है, पर यही है कि हमें कोई जवाब उनसे कोई सीरियस जवाब जो है उनकी तरफ से हमें नहीं मिला। तो इसी वजह से हमने अब ये प्रोटेस्ट का जो रूप है वो इख्तियार किया है कि हम प्रोटेस्ट की सूरत में सारी ख़वातीन निकली हैं कि हमारी डिमांड्स हैं जो इतनी आसानी से हुकूमत में बैठे लोग इग्नोर कर देते हैं। इतने ज़्यादा लोग हैं, 62,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अनडॉक्यूमेंटेड लोग मौजूद हैं US में, 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और हमारी इतनी वक़्त ही नहीं है कि ये हुक्मरान जिनको हमने ही उधर बिठाया है इनकी सीटों पे और वो हमारी बात ना सुने। तो इस वजह से ही हमने प्रोटेस्ट को इख्तियार किया है, और ये कैंपेन अब हम कम्युनिटी ही ये ड्राइव करेगी कैंपेन को फॉरवर्ड। डायलॉग का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है। अब हम सिर्फ इनसे तब बात करेंगे जब ये एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं कम्युनिटी एक्टिविस्ट इरम हनीफ। इस वक्त हमने देखा कि TPS के हवाले से बहुत भरपूर तरीके से उन्होंने यह मौक़िफ़ जो है पाकिस्तानी इलीगल जो हमारे यहाँ बहन भाई रह रहे हैं उनका मौक़िफ़ यहाँ पर भरपूर तरीके से पेश किया। इरम हनीफ मजीद क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? थैंक यू सो मच समरीन। आज हम बहुत सारी ख़वातीन, यंग लड़कियाँ और हमारे मर्द हजरात हमारे साथ मौजूद थे, और हम सब की जो डिमांड थी एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी, जिसमें पहली दफ़ा बहुत सारी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस एक प्लेटफॉर्म पे आईं, और ये सारा इंतज़ाम जो है ड्रम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोर स्पॉन्सर है और इस इवेंट की, और इस जो है इवेंट के ऊपर इस मसले के ऊपर एक्चुअली बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता ऑलमोस्ट 1 साल से जब से पाकिस्तान में फ़्लड आए उस वक्त से उन्होंने मूवमेंट शुरू की है, और अब तक कंटिन्यू है मूवमेंट। और उसकी सिर्फ जो एक डिमांड है वो सिर्फ यही है कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे 62,000 से प्लस पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ स्टेट्स में,
جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہے، میننگ ان کے پاس لیگل پیپرز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری مشکلات ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے پیاروں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے پیپر بھی نہیں مل سکتے، پاکستان واپس بھی نہیں جا سکتے، نہ ہی وہ کوئی اچھے طریقے سے روزگار حاصل کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی قسم کے گورنمنٹ کے بینیفٹس کو حصول میں آسانی ہو سکتی ہے. اور ہمارے پاس تقریباً 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی جو امریکہ میں موجود ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس بھی اپنے سائلوز میں رہ رہے ہیں اور بہت ساری مشکلات کا وہ شکار ہیں. اور یہ جو ٹی پی ایس ہے یہ آن ریکارڈ ہے کہ امریکہ کی گورنمنٹ نے 16 ممالک کے باشندوں کو اگر کسی قسم کا نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے یا وار ہوتی ہے یا فلڈنگ ہوتی ہے یا ارتھ کوئک ہوتی ہے، تو امریکہ کی پالیسی ہے کہ امریکہ کی گورنمنٹ اگر اس ملک کی گورنمنٹ ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہمارے انلیگل باشندوں کو ٹی پی ایس دیا جائے تو امریکہ کی گورنمنٹ دیتی ہے. اور 16 ممالک کے لوگوں کو آلریڈی ٹی پی ایس مل چکا ہے. ہم پاکستان واحد کنٹری ہے جس میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا، جو کہ 76 ایئرز میں پاکستان میں کبھی اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوا. اور ہم چاہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ چاہتی تو ہم یہ بات کر سکتے تھے، آگے بڑھا سکتے تھے، لیکن گزشتہ اتنے مہینوں کی جدوجہد کے باوجود بہت ساری پاکستانی آرگنائزیشنز نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مختلف طریقے سے، مختلف چیزوں سے، مختلف ڈائلاگ سے، لیکن اب تک بھی ہمیں کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے، ہمیں کوئی ریئل ایکشن نظر نہیں آ رہا ہے. اس وجہ سے آج ہم یہاں UN کے سامنے کھڑے ہیں. یہ وومن ہسٹری منتھ ہے اور ہماری پاکستانی خواتین نے مل کے اس میں ایک سٹیپ لیا. اس میں ساری 15 سے زیادہ آرگنائزیشنز ہیں، جس میں پاکستانی آرگنائزیشنز بھی ہیں، مسلم آرگنائزیشنز بھی ہیں، انڈین آرگنائزیشنز بھی ہیں، سکھ کمیونٹی بھی ہے، لیبر یونین کے ریپرزنٹیٹیوز بھی ہیں. ہم سب اکٹھا ہوئے اور ہم سب نے اس کو یہ ڈیمانڈ کی کہ پاکستان گورنمنٹ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ آگے معاملے کو بڑھائے، ریکویسٹ کرے، جو ان کو نیسیسری اقدام لینے کی ضرورت ہے وہ اقدام لے، تاکہ US گورنمنٹ پاکستانی لوگوں کو ٹی پی ایس اور SSR جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ اسٹیٹس کی جو ہے وہ گرانٹ ہوا جائے. اس وجہ سے ہم سب اکٹھا ہوئے اور انشاءاللہ بہت ساری آرگنائزیشنز مل جل کے اس کام کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ نیسیسری اقدام جو ہیں وہ آن ٹائم ہو سکے. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. اچھا ارم حنیف، اس وقت ہم یونائٹڈ نیشن کے تقریباً سامنے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بلاول بھٹو تو ہمارے وزیر خارجہ امریکہ آئے ہوئے ہیں اس وقت، تو ان تک ہماری آواز پہنچتی ہے؟ ہماری آواز ان تک پہنچنی تو چاہیے ٹیکنیکلی، لیگلی اینڈ پروسیجرلی، بٹ یہ ہے کہ آواز سننے کے بعد اس آواز پہ اقدام کیا ہوتا ہے اس کے ہم منتظر ہیں.